transpose of a matrix. Let a matrix A equal to Aij m by n, then its transpose is denoted as AT or A dash, and transpose is equal to Aj n by m. That means A गोटे मैट्रिक्स देइछि, ए गोटे मैट्रिक्स देइछि m by n ऑर्डर रो, जेतेबेला हम एरो ट्रांसपोज करबा तार ऑर्डरटा सिंपली n by m हे जेबो। आउ कोन ना ए मैट्रिक्स रो a i j पोजीशन रे जो एलिमेंट अछि तार मु जेतेबेला ट्रांसपोज करबी तले a i j पोजीशन रो एलिमेंटटा सिंपली a j i को पळेबो। a i j रो तो a i j पोजीशन रो एलिमेंट a j i को जीवो और j i रो पोजीशन एलिमेंट i j को जीवो। फॉर एग्जांपल सपोज गोटे एलिमेंट 1 2 पोजीशन रे अछि ताले ता जेते हम ट्रांसपोज करबी सेटा 2 1 पोजीशन को पळेबो। फॉर एग्जांपल सपोज a होछि a b c d, तब a ट्रांसपोज ता कोन हबो ना सिंपली हमर 1 1 पोजीशन रे जो एलिमेंट अछि से 1 1 रहइबो, 2 2 पोजीशन रे जो एलिमेंट थिबो 2 2 रहइबो, 3 3 पोजीशन रे जो एलिमेंट थिबो से 3 3 रहइबो। 1 2 पोजीशन रे जो एलिमेंट अछि 2 1 पळे आसीबो, 2 1 पोजीशन 1 2 पळे आसीबो, and 1 3 रो पोजीशन रे एलिमेंट 3 1 पळे आसीबो लाइक दिस। ताले सिंपली गोटे ट्रांसपोज गोटे मैट्रिक्स रे कहले कोन ना रो को कॉलम रे बा रो को आके कॉलम कर देबा बा कॉलम को रो करबा। But simply in simple language, transpose of a matrix can be obtained by interchanging all rows into columns or columns into rows. This is the mathematical representation, and simply होची रो को कॉलम करिया सेति होची हमर बा कॉलम को रो करे सेटा होची ट्रांसपोज। तांस केमिति करिबा ना मु कोन करबी ना फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो रे कन्वर्ट करबी। फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम होची एसी ताकू कोन लिखबी ना फर्स्ट रो करबी। सेकंड कॉलम बीडी होची ताकू सेकंड रो रे लिखबी। सिंपली देखि ताल चेक कोन से मैट्रिक्स देइछि ट्रांसपोज होइले कि छि मैथमेटिकली डेरिवेशन सॉरी मैथमेटिकली हमर प्रोसेस जाने दरकार नै। पुरा एति करबा जे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करबी, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो लाइक दिस। अदरवाइज जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम लाइक दिस। Our example होगा a equal to a b c d e f। तो यार मु जदी ट्रांसपोज पे बाहर करी केमिति ना सिंपली फर्स्ट कॉलम अछि जहा फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करबी दैट मींस a d, सेकंड कॉलम सेकंड रो b e, और थर्ड कॉलम थर्ड रो c f। आ गोटे जिन समार करबा एठी हमें जानि छथि डेफिनेशन रो जदि a गोटे मैट्रिक्स तार ऑर्डर m क्रॉस n होछ बा m by n होछि ता ट्रांसपोज रो ऑर्डर ता केते ना n by m होबो। एठी ऑर्डर केते अछि ना 2 by 2, एठी भी सेम 2 by 2 होछि। ए केस रे हमें देखिबा एठी यार ऑर्डर होछि केते ना 2 by 3, 2 by 3 दैट मींस दुइटा रो तीनटा कॉलम। यार जो ट्रांसपोज नले ता ट्रांसपोज रो ऑर्डर केते गेला ना 3 by 2, तले m by n ता कोन हेगला ना n by n हेगला। एतली बहुत सिंपल जिंस ट्रांसपोज। तले गोटे मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज कहला हम रो को कॉलम करबा बा कॉलम को रो करबा। एबे देखिबा किछि प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, लेट a be any matrix, a be any matrix and k be any scalar, then constant a k into a transpose equal to a रो whole transpose. Simply this means is जे कोन से गोटे मैट्रिक्स रो मु ट्रांसपोज लिखि छी, ट्रांसपोज रे गोटे कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करिबा जहा टोटल पर से मैट्रिक्स रे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करी द ट्रांसपोज दवा सेम। फॉर एग्जांपल
suppose A गोटे matrix मु नौची 1 2 3 5 and some scalar k equal to नौची suppose let 2 तबे A transpose टा केते हमर एठी होची ना 1 2 3 5 अछि तबे ट्रांसपोज टा हो 1 3 2 5 तबे एबे देखिबा k into A transpose तबे k into A transpose that is equal to k टा होची 2 A transpose होची 1 3 2 5 and that is equal to या पूर्व मु कहिछि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रे जे कोन से गोटे मैट्रिक्स सहित गोटे जदी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो त से कांस्टेंट मैट्रिक्स रो ईच एंड एवरी एलिमेंट सहित मल्टीप्लाई हो तले 2 टा ईच एंड एवरी एलिमेंट सहित मल्टीप्लाई हो दैट मींस 2 6 4 and 10 नाउ हम ए जिंसो इक्वेट करले k into A transpose वर्तमान ka रो होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू फर्स्ट k रहिला 2 into A होची 1 2 3 5 1 2 3 5 यस तो मल्टीप्लाई करबी तारो होल ट्रांसपोज and that is equal to 2 दा आगो मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई करबी 2 4 6 10 रो होल ट्रांसपोज इक्वल टू चेंज हेजबो ता रो कॉलम चेंज हेजबो दैट मींस 2 6 4 10 here k into A transpose 2 6 4 10 and k A ro whole transpose equal to 2 6 4 10 these are same so that k into A transpose equal to k A ro whole transpose this is the first properties A plus B रो whole transpose that is equal to simply A transpose plus B transpose A minus B रो whole transpose that is equal to A transpose minus B transpose and simply addition of subtraction case रे simply A plus B रो whole transpose है A transpose plus B transpose होगा A minus B रो whole transpose है ना A transpose minus B transpose होगा आगे बढ़े जिनसो जे कोन से गोटे मैट्रिक्स अछि ता ट्रांसपोज रे मुझे ट्रांसपोज नेबी ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ताने हमर ओरिजिनल मैट्रिक्स होछि ए तार ट्रांसपोज जते मु इक्वेट करछि सिंपली से ओरिजिनल मैट्रिक्स पळे आसीबो यार जदि मु कहबी एग्जांपल गोटे नउछि एरो ए ट्रांसपोज केमति ए होछि लेट ए होछि 1 2 3 4 ताले ए ट्रांसपोज केते होबा ना 1 3 2 4 simply first column first row second column second row यार ते मु कोन कहै छै ना ए ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज मु इक्वेट करू छी ए ट्रांसपोज दैट इज कॉल्ड यार ट्रांसपोज मतलब गेला 1 2 3 4 तो ए ट्रांसपोज रा केते गेला ना सिंपली ए मैट्रिक्स ए गेला ये गेला फोर्थ प्रॉपर्टीज अगेन A into B रो whole transpose simply B transpose A transpose A B C रो whole transpose C transpose B transpose A transpose in case of addition or subtraction A plus B रो transpose equal to A simply A transpose plus B transpose and A minus B रो whole transpose equal to A transpose minus B transpose in case of multiplication A into B रो whole transpose equal to B transpose into A transpose A into B by A B C रो whole transpose equal to C transpose B transpose A transpose reverse direction आसीबो these are the properties of transpose now we discuss about symmetric matrix what is symmetric matrix definition is let a square matrix A square matrix A. A of the square matrix is said to be symmetric if and only A transpose equal to A. This is the condition.
A square matrix A is said to be symmetric if and only A transpose equal to A. गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइथिबो सेटा सिमेट्रिक ना नहीं केमिति जानिबा सिंपली तार ट्रांसपोज टा इक्वेट करिबा ट्रांसपोज इक्वेट कला परे जब से गिवन मैट्रिक्स सहित सेम हबो तब से मैट्रिक्स टा को कोन कहबा ना सिमेट्रिक तार मैथमेटिकल रिप्रेजेंट केमिति करिबा ना सपोज A गोटे मैट्रिक्स A is said to be A होचे गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स A I J M by M तो ये गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ऑर्डर इज M by A फॉर्मेट रे नोट 3 तो एटा सिमेट्रिक केते हबो ना A ट्रांसपोज इक्वल टू सिंपली ये गोटे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स देइछि A I J तले A I J इक्वल टू A J I for all I J ए तीन जिंस हम रहइबो मैथमेटिकली गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइछि तर I J पोजीशन रे जो एलिमेंट थिबो J I पोजीशन रे सेम एलिमेंट थिबो for all I J तले एती कंडीशन जदि सैटिस्फाई करिवो तब कहबा कोन ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली जे कोन से गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ता केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ऊपर ही बेस करि हबो या आइदर से सिमेट्रिक और नॉट ए गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइछि ता ट्रांसपोज मु इक्वेट करिवि जदि से गिवन मैट्रिक्स ए सहित समान हैला ताले ए हो जे सिमेट्रिक अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक फॉर एग्जांपल तो जनरल फॉर्मेट का कोन ना सपोज ए बी सी सॉरी B C सपोज इट होची A मैट्रिक्स यदि यार हम ट्रांसपोज टा इक्वेट करिवे A ट्रांसपोज तो सिंपली से A B B C A मैट्रिक्स में A B B C ता ट्रांसपोज सेम है तो हियर A ट्रांसपोज इक्वल टू A सो दैट A इज सिमेट्रिक सिंपली तापर आउट एग्जांपल होची B गोटे मैट्रिक्स A H G H B F G F C तो यार हम ट्रांसपोज टा आरंभ ट्रांसपोज से सेम आसेबो A H G H B F G F C here also B transpose equal to B so that B is symmetric. These are general structure of second order or third order symmetric matrices. Simply केमिति जानिबा ना हम ट्रांसपोज इक्वेट न करी के केमिति जानिबा जे गोटे सिमेट्रिक न सिमेट्रिक नो गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स हमको देइछि ता डायगोनल दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल एलिमेंट से हमको जहां भी किसी देइछि दैट इज नॉट मैटर फॉर अस गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स रो मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मु छाडी देली ताकू छाला परे डायगोनल रो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट रो देखिबी अपर पार्ट और लोअर पार्ट रो कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट गुडा को जदी सेम हेइथिबो ताकू मु कोन कहबी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस केस it is the principal diagonal and corresponding sides of upper side and lower side are both are equal to B so that this is symmetric in this case the principal or main diagonal roila main diagonal ro upper side and lower side को compare करेबी कोन ना corresponding element गुडा का सेम अछि कि नहीं this is मेन डायगोनल रहला कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट एडी H अछि एडी G अछि एडी F अछि सो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली जे कोन से गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइथिबो डायगोनल एलिमेंट जहां भी किछि देइछि ताकू छाडी दबो किछि दरकार नै मैटर नै हमको सिमेट्रिक जानिबार अछि डायगोनल एलिमेंट को छाडला परे डायगोनल रो दी साइड द अपर साइड एंड लोअर साइड रो कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट गुडा को जो सिंपली सेम ही तो ताकू हमें कोन कहबा ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट रहला कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम डायगोनल रहला कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट गुडा का दी साइड रो सेम अछि ताकू कोन कहबा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो गोटे एग्जांपल दे दोछि
1 2 3 2 5 7 and 3 7 9 एग्जांपल दोची एठी मु देखिबी यार मु ट्रांसपोज इक्वेट न करी केमिति जानिबी जे सिमेट्रिक नाही सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल को मु छाडी देली डायगोनल रो दी साइड रो कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट को देखुची एठी 2 अछि एठी 2 अछि एठी 3 अछि एठी भी 3 अछि एठी 7 अछि एठी 7 अछि दैट मींस डायगोनल रो अपर एंड लोअर साइड रो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट रो कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट गुडा 2 2 3 3 7 7 सेम अछि तले मु कोन कहिबी ना एटा ओके सिमेट्रिक मैट्रिक्स this is the all about symmetric matrix skew symmetric matrix a square matrix A is said to be skew symmetric if and only if A transpose equal to minus A symmetric केतले कहथला में ना A transpose equal to A थिले symmetric कहथले skew symmetric कोन ना simply A transpose equal to minus A तल जे कोनोसी गोटे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A हिथिबो A I J M by M हिथिबो तो केते बळे मैट्रिक्स टाइप को हम स्क्यू सिमेट्री कहबा ना A I J इक्वल टू माइनस ऑफ A J I फॉर ऑल I J तले I J पोजीशन रे जो एलिमेंट थिबो J I पोजीशन रे सेम एलिमेंट दैट मींस सेम न्यूमेरिक वैल्यू रहबो ताकि साइन चेंज अने प्लस तले माइनस बाय माइनस तले प्लस मैथमेटिकली नॉर्मल गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइजी ता ट्रांसपोज ता मु इक्वेट करबी जदी से ट्रांसपोज इक्वेट कला परे माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स होउची ताले मु से मैट्रिक्स ता कोन कहबी ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहबी फॉर एग्जांपल लेट A गोटे मैट्रिक्स 0 A minus A 0 लेट A ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हे गला ट्रांसपोज माने रो कॉलम इंटरचेंज हे जिवो 0 minus A and A 0 now taking -1 from this the matrix तो माइनस मु कॉमन नहीं गले कितना से वाला 0 A minus A 0 and that is equal to minus रहला this is matrix A तले मु एठी A ट्रांसपोज इक्वेट करले मते कोन मिलला ना माइनस A तले A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A so that A is called skew symmetric matrix again गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइजी हमें ताको केते बेले स्क्यू सिमेट्रिक कहिबा ना सिंपली से स्क्वायर मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज इक्वेट करिबा ट्रांसपोज इक्वेट कला परे जदी माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स होउची ताहले मुसे गिवन मैट्रिक्स बा ओरिजिनल मैट्रिक्स को कोन कहबी ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए गोटे मु मैट्रिक्स नउची 0 A minus A 0 यार मो ट्रांसपोज इक्वेट कला पर सेटा कोन होउची ना माइनस A that means A transpose equal to minus of A so that A is called skew symmetric matrix and now we taking another example let B equal to 0 A minus B minus A 0 C B minus C 0 यार ट्रांसपोज मु इक्वेट करूची B ट्रांसपोज इक्वल टू 0 minus A B A 0 minus C minus B C 0 and minus को मु कॉमन नहीं आछी होला पर केता से बना 0 A minus B minus A 0 C B minus C 0 and that is equal to minus B this is B so in this case matrix B रो ट्रांसपोज इक्वेट कले ट्रांसपोज इक्वेट कला परे B ट्रांसपोज इक्वल टू minus B so that this matrix is
skew symmetric. In this like data example रे हमें कौन देखले simply symmetric case रे diagonal element ऊपर हमर किछि कहिबार नाही बा simply diagonal element जे भी रहले सेटा किछि मैटर करूनी किंतु in skew symmetric matrices diagonal elements are most zero and corresponding elements of two sides of the diagonal principal diagonal numeric value are same and sign are different simply go to a hale other hobo minus a in this case diagonal elements are most zero principal diagonal zero so element guda ko zero hobo skew symmetric matrix re and data jako side ro corresponding element guda ko numeric value same ରହିବ sign different ରହିବ तने एठी a ରହିଲେ एठी minus ରହିବ राखि सेठी 1 ରହିଲେ minus 1 ରହିବ बा एठी minus 1 ରହିଲେ एठी 1 ରହିବ एठी 2 ରହିଲେ minus 2 ରହିବ like this एठी a ରହିला एठी minus a ରହିला एठी minus b ରହିला एठी b ରହିला minus c and c ताले जे कोनसी गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स देइथिबो ताले हम केमिति जानबा सेटा स्क्यू सिमेट्रिक ना नाही फर्स्ट कंडीशन ता डायगोनल का हम प्रिंसिपल डायगोनल रो एलिमेंट को देखिबा सब गुडा को जदी जीरो होइतो त प्रोसीड करिबा अदरवाइज जदी डायगोनल एलिमेंट गुडा को जीरो देइनी जदी किछि अदर दान जीरो किछि अछि अदर एलिमेंट किछि अछि ताले माने सेटिंग में स्किप करबा जेटा स्क्यू सिमेट्रिक नुहो स्क्यू सिमेट्रिक रो फर्स्ट कंडीशन होछि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो ताले जे कोनसी गोटे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक जानिया पहले मेथड होछि टू नो माने diagonal element गुडा को जीरो तापर corresponding the upper part of diagonal principal diagonal रो upper part and lower part रो element गुडा को बा corresponding element गुडा को एनालिसिस करबी डेटा जाको corresponding element रो न्यूमेरिक वैल्यू सेम थिबो किंतु साइन डिफरेंट थिबो दैट मींस गुडे a थिले माइनस a थिबो माइनस b थिले b थिबो बा b थिले माइनस b थिबो c थिले माइनस c थिबो लाइक दिस तले एतिके जदी कंडीशन रहउछि आमाके तला हम कोन कहि परिबा ना जो मैट्रिक्स टा ऊपर हमें डिस्कशन करछथि जो मैट्रिक्स को हमें चेक करछथि जैसे स्क्यू सिमेट्रिक ना नहीं से स्क्यू सिमेट्रिक some examples about symmetric and skew symmetric matrices combining होछि suppose हम गोटे कहिबे 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स ऊपर हम डिस्कशन करबे एटा सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक ना not both or both diagonal matrix zero नुहो ताने कि completely skew symmetric हे परिबोनी तापरे diagonal element matrix मतलब principal diagonal छला परे corresponding element गुडा को not equal ये 2 रहि गला ये 3 रहि गला त माने एटा कोन ना neither any that means ये symmetric नुहो कि skew symmetric नुहो again 0 1 1 0 एठी ए मैट्रिक्स को था डायगोनल एलिमेंट गुडा को 0 अछि दैट मींस डायगोनल एलिमेंट गुडा को इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट कैन बी any real number any complex number किंतु आउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रे कंप्लीटली 0 हो तला हम जतल देखले डायगोनल एलिमेंट गुडा को 0 अछि मे बी एटा सिमेट्रिक हे पारे स्क्यू सिमेट्रिक हे पारे तापर जतल देखिले डायगोनल एलिमेंट गुडा को 0 अछि एंड corresponding elements of two sides of main diagonal are same कंडीशन ना कहार पळे आसला ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो सिंपली डायगोनल एलिमेंट जे भी हेता corresponding साइड रो एलिमेंट गुडा को सेम होला ता कहबा कोन ना सिमेट्रिक अब केवल डायगोनल एलिमेंट गुडा को 0 अछि देखि कि स्क्यू सिमेट्रिक कहबा नै काहे के ना स्क्यू सिमेट्रिक पई दीटा कंडीशन डायगोनल एलिमेंट गुडा को 0 एंड corresponding एलिमेंट गुडा को साइन चेंज रहबो तले एठी 1 अछि जदि -1 था त मोइ कहबा स्क्यू सिमेट्रिक अदर suppose कहि 0 0 0 0 that means null matrix of square order एठी देखो
diagonal elements ra 0 rahila, other element ra 0 rahila. That means a null matrix satisfies both conditions of symmetric matrix and skew symmetric matrix. So a null matrix is called both symmetric and skew symmetric matrices. Some notes about diagonal elements of skew symmetric matrices are 0. And the diagonal elements of skew symmetric matrices are 0. Second, a null matrix of square order is both symmetric and skew symmetric matrix. So a null matrix of square order is both symmetric and skew symmetric matrix. Remember this.